Yes. So somebody in the last class was asking that what is the difference between साढ़े साती and dasha? शनि की दशा और शनि की साढ़े साती में क्या अंतर होता है, right? So what happens? Dasha साढ़े साती is like the gochar of Shani on your Rashi and the Rashi in front and back to you. Okay. So if you want to calculate a particular event in your life, then we see the gochar. Okay, like suppose now can you share your screen again? Yeah, Sanjay? Yeah. 1 second. Okay, so now for Sanjay, the Can you 12th, explain me once again why you said it is in the Rashi of Jupiter and therefore we need to donate to ashram? because it is in the ninth house, no? Your 12th lord is in the Oh, ninth house, and okay, ninth house is of Guru. okay, Okay, okay. yeah. So see, when we want to see a particular event in life, then we see the transit, gochar. And when we want to see the quality of that phase and the maybe the exact time of happening of that event, then we see the dasha also. Okay, so that is how we calculate what we see the gochar and dasha. Okay, so Sanjay, you were talking that you have done some calculation about your marriage timing also. So can you show that Yeah, using I your have used that transit Astro chart? Sage. Yeah. Yeah. So Okay. Saturn, my seventh house is Lord is Saturn, and Okay. I think Saturn is already seated in the transit Ah, chart in the tenth. correct, correct. Okay. So suppose if somebody wants to see a marriage in a male chart. Okay. So what is the natural karaka of marriage in a male kundali? Venus, Venus. Okay. And one the house personalized lord. karaka, and everybody has a personalized karaka of marriage, that is the seventh house planet or seventh house lord. Okay. So when the impact of seventh house lord or seventh house planet is there on the seventh house in the transit gochar, so gochar everybody understood, no? There is a planetary position at the time of your birth, right? And there is a certain planetary position right now. Okay, so right now which planet is influencing your seventh house, which house, that is called gochar. So there is a Shani ka gochar in his seventh house now. Okay, and Venus is in the 12th house. Okay, so how much time Venus takes to 1 transit month, one? I guess. Yeah, one Rashi. Okay, so that means Venus will come into your first house when That I how to check that? you told, na, it takes 1 month. One it Yeah, it takes 1 month, so So after approximately 1 month, it will be in your first house, right? right, So from right. your kundli, we can say that what can we interpret from that when Venus will come in your By first house? next month there is a Venus would be coming, so there would be a strong possibility Yes, because next month there will be a strong possibility. Why? Because Venus seventh aspect will be on your seventh house, hmm, right? right, And your seventh lord right, is also sitting in your seventh house. yeah, Okay. So there is a strong possibility that your marriage will be fixed. hmm, Okay. Now, when will be the next yoga? So Saturn will be in Aquarius till how many years? 2.5 years. So it moved into Aquarius this year, January. So it will be there in Aquarius till 2025, June. Okay. So when will be the next yoga for your marriage? Can you tell me? 1 year later when Venus transits again. When Venus will Sorry, reach the seventh house. So how in how seventh many house, sorry, months? When 6 months, when yeah. Yeah, 6 months. So that means if like I'm an astrologer and I want to analyze your chart, so I would say that it is quite possible that next month, maybe October, yeah, October you can say. So in the month of October, during Navratri or sometime, your marriage may get finalized, and maybe after 6 months, it will be 55. Matlab, the actual uh, like Yeah, fixing can be done this month, next month, and after 6 months, maybe in January or February, it will be done. Actually, it can be fixed. So we can predict that, right? right, yeah. Yeah.
यस, सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। समझ में आया? लेट मी सी, रितिका, उदित, मनीष जी, योगेश, गौरव, संदीप जी, आया ना समझ में ट्रांजिट नहीं, का? यस यस। ये ट्रांजिट चार्ट देखना कैसे भी नहीं समझा, क्योंकि अभी मैं एस्ट्रो ऐप पे अभी मैं ट्रांजिट चार्ट चेक कर रहा हूँ, तो उसमें तो वीनस 7th हाउस में दिखा रहा है, तो इसके हाँ, इस तो वीनस कौन सी राशि में है और आपकी कौन सी राशि किस हाउस में है, उसके हिसाब से होगा ना। अभी ये संजय का फर्स्ट हाउस में लियो राशि है, आपके फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉर्न होगा। देखो फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है? 10 नंबर, राइट? या कैप्रिकॉर्न, राइट राइट। तो कैप्रिकॉर्न है फर्स्ट हाउस में, तो वीनस कहाँ आएगा? 7th हाउस में। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, ओके, इंडिविजुअली चेंज है। मुझे लगा कि ये ट्रांजिट फिक्स ही रहता है उसके हिसाब से हाँ करूँ। नहीं, ट्रांजिट इज पर्सनलाइज नो। अब किसी का ओके शादी का, ओके। संजय का शादी का योग अभी नेक्स्ट मंथ बन रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि पूरी दुनिया में सभी का शादी नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। so that ओके ओके। that हाँ that is समझे। that is something you have to check. That is like ओके। something can be seen through transit. Transit are very very important. Okay, So किसी को और कुछ? transit Yeah. chart will change every day, especially moon, because moon will change every day. हाँ करेक्ट, मून विल चेंज एवरी डे, लेकिन जब हम जैसे एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करते हैं, तो वी डोंट सी मून एज सच, क्योंकि ठीक है, जो आपको कभी कभार पर डे वाले प्रिडिक्शंस दिखाई देते हैं ना, दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द मून। बट जो जैसे बड़े बड़े प्लेनेट होते हैं, जैसे सन हो गया, जुपिटर हो गया, राहु केतु हो गए, सो दे गेट्स चेंज वेरी लेस, वंस इन 1 2 3 years। ओके, सो दैट इज वाई जो जैसे एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन होते हैं ना, जो 6 मंथ के या ईयरली प्रिडिक्शन होते हैं, तो वो आपके मून से इन सब प्लैनेट की पोजीशन देख के किए जाते हैं। सो दैट आल्सो वी विल लर्न इन द अपकमिंग क्लास। एंड कैन एनीबॉडी टेल मी कि, ओके चलो ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ, लेट माई सेल्फ ओनली टेल मी कि बहुत सारे लोगों के केस में क्या होता है, ले ऑफ हो जाते हैं जॉब से, एंड ऑल्सो दे थिंक अबाउट लीविंग द जॉब। ओके, सो कैन यू टेल मी विच प्लेनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीविंग द जॉब, एंड उस प्लेनेट का कौन से हाउस में आएगा तब उसको लीव जॉब छोड़ने की टेंडेंसी होगी, या उसकी लाइफ में ले ऑफ का इवेंट होगा। सोचो एक बार थोड़ा केतु। सा। ओके, केतु, वेरी नाइस। किसने House. किसने किसने बताया मैं कि? संजय। संजय। वेरी नाइस, वेरी नाइस, केतु। ओके, एंड एंड हाउस इसका जो ऑब्जर्व 10th किया है, हाउस। यस, सभी लोग 10th. 10th house, 12th house is also there. But yesterday only I met one very senior astrologer in ashram. So he told me that when Ketu transit the 6th house, then I have seen कि मतलब जॉब चेंज या जॉब छोड़ता ही है इंसान। ओके, सो ही टोल्ड मी 6th house इज लाइक द कारका इफ केतु, क्योंकि केतु का जो नेचुरल हाउस है ना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ 6th house। So this is something interesting I found out yesterday कि किसी का भी कुंडली में केतु का ट्रांजिट अगर 6th हाउस में हो रहा है, ओके, लाइक सपोज किसी की इस समय कुंडली जेमिनाई लगने की है, जेमिनाई नहीं सॉरी, टॉरस लगने की है। ओके, तो उस समय केतु का ट्रांजिट 6th हाउस में हो रहा होगा, सो दे आर वेरी हाई चांसेस कि दे विल स्विच द जॉब। So yeah, this is one more interesting thing. And coming to the female chart, फीमेल के हाउस में मैरिज का कारक कौन सा प्लेनेट होता है? जुपिटर। Jupiter. जुपिटर। ओके, तो किसी फीमेल के चार्ट में हमें देखना है कि मैरिज कब होगी, तो व्हाट वी विल सी? When Jupiter is in Jupiter the and 7th seventh house. house lord. ओके, तो जुपिटर की कितनी दृष्टि होती है? 3, 3। 5, 7 and 9. ओके, सो कैन यू मेक अ वेरी वेरी लाइक इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन, जनरल इंटरप्रिटेशन कि अगर मतलब एक मेल की शादी के चांसेस अगर अराउंड 20% है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो फीमेल के कितने होंगे?
to 3. Yes. So this is very interesting. So suppose like this is a very general prediction. मतलब it is very true also if you will see practically also कि अगर किसी मेल का किसी रिलेशनशिप में जाने का चांस अगर 20% है तो फीमेल का विल बी लाइक ऑलमोस्ट लाइक 40% 60%, क्योंकि जुपिटर की 3 दृष्टि होती है। तो जुपिटर की अगर 7वीं दृष्टि भी है 7th हाउस में, 5वीं दृष्टि भी है 7th हाउस में, या फिर 9वीं दृष्टि भी है 7th हाउस में, so they will like they have the chance to get married or go into relationship. So this is very interesting. Sahil, एक और क्वेश्चन है. I am just clarifying. So Mars is now in the second house, Yeah, and I was frauded in December. So I think Mars का 1.5 months का गोचर होता है correct. पर राशि. तो it must be in the 9th house during December, 8th or 9th Okay, house. okay. So how do we predict the 9th house में, because there was a परिवर्तन राजयोग, that's why it happened. Like how do we know कि वो event उस time में होने वाला है? Like So you have to see both the things, which house Mars is owning, and you are saying like जब Mars का transit होगा 9th house में तो उसको कैसे interpret करेंगे, right? like the Mars will always be in the 12th house. And for example, Mars is in second house right now. What is the probability कि something like that will happen now? Or इस समथिंग house में लाइक रहने पे व्हाट ज्यादा यू आर सेइंग अबाउट योर फ्रॉड। चलो ये भी कवर of कर लेते हैं। हाँ तो जब जैसे कैन यू टेल मी संजय एट व्हाट डेट योर दैट इंसिडेंट्स हैपन ऑफ योर fraud, you I think remember the date? 22nd December or 23rd December. 22nd December. 2022. 22, yeah. 2022. That means how many months from now? Around 8 months back. 8. Around 9 months types. Yeah, 8-9 Yeah. months types. Okay, so 9, that means Mars, if you consider 1.5 months per Rashi, Yeah. so we can take it back to 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rashis. Okay, so Mars will be somewhere into 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so that means that time your Mars was in the 9th house. Right. Okay, so fourth aspects of Mars was falling on which house? 12th house. Yeah. Correct. So when Okay. your Mars went in the 9th house and fourth aspects was falling in the 12th house, then you're that fraud. So whenever your Mars is in the 9th house or even Third 6th house, 6th house, okay. Yeah. So you have to be more careful, and even you can say 5th house, 6th house, 9th house, because 8th aspect is also there of Mars. Okay, so whenever your Right. Mars will be on in your 5th house, 6th house, and 9th house, what you need to do? You need to do charity to ashram Right. to get rid of your chances of getting fraud or loss of money. Right. ओके, आई होप और लोगों को भी समझ में आ रहा है। आई विल एक्सप्लेन अगेन सिंपल वर्ड्स में कि संजय टोल्ड कि उसका दिसंबर में फ्रॉड हुआ था कोई ऑनलाइन और उसने 1 लाख रुपए लूज किए थे, राइट संजय? सो इन संजय's लग्न चार्ट मार्स इज सिटिंग इन द 12th हाउस व्हिच इज द कारक ऑफ लॉसेस। सो दिसंबर में मार्स 9th हाउस में आ गया था, उसकी चौथी दृष्टि 12th हाउस में थी, तो एट दैट टाइम संजय went through this loss of money. Okay, so that means जब आपका 12th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसका इन्फ्लुएंस ट्रांजिट में 12th हाउस में आता है, तो यू हैव चांस ऑफ लॉसेस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. So that period of time you have to find the remedy and do it. So the remedy will be different for everybody. Okay, I think Sanjay ka internet is down. So yeah. Sorry. अच्छा, Yeah, इस केस में एक क्वेश्चन है. yeah. अगर समझो लॉस का हाउस है, उसमें मार्स
है, लेकिन वो डेबिलिटेटेड है कि एग्जॉल्टेड है, उससे कुछ फर्क पड़ता है कि उससे हाँ कुछ फर्क? डेफिनेटली, अगर मार्स की डिग्निटी बहुत स्ट्रांग है, वो एग्जॉल्टेड है, या फिर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स या फिर ग्रेट फ्रेंड के हाउस में है, तो वो चांसेस कम होंगे, उसका लॉस ऑफ मनी वाले चांसेस कम होंगे। इनफैक्ट जो उस हाउस के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट इज मोक्षा, मोक्षा इज अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट ऑफ 12th हाउस। तो क्योंकि प्लेनेट की डिग्निटी बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम में पर्सन विल थिंक अबाउट मोक्षा मोर, think about the positive attribute of that house more, and that will bring comparatively more positive result that time as compared to the uh, case of malefic planet influence. ओके, ओके। Okay, okay, so now let's discuss one very more interesting topic, जो कि it will give you more clarity.